Hello students, today we will discuss about the adsorption isobars and after that we will discuss about the applications of adsorption. Okay. Now as we know that the adsorption is a process of dynamic equilibrium in which the forward process, that is adsorption, is exothermic and the backward process, that is desorption, is endothermic in nature. In other words, we can say, according to Leach-Atwood principle, when the temperature gets increased, means the adsorption decreases, means desorption takes place. Okay. Now, therefore, a graph which is drawn between the amount of gas adsorbed per gram of the adsorbent, that is x by m, versus T, that is temperature, at a constant equilibrium pressure of the adsorbate gas is known as adsorption isobars. Iso means same, bar means pressure is kept constant. Okay. So the adsorption isobars for both the physical as well as the chemical adsorptions are shown here. Now we can say that in physical adsorption isobar, that is, it is the x by m, that is the amount of gas adsorbed per gram of adsorbent, and its temperature T at constant pressure P. Okay, when we visualize this graph, we observe that when the temperature is kept low, when the temperature is low, the extent of adsorption is maximum. Now, as the temperature gets increased, the extent of adsorption goes on decreasing. And we know that जो physical adsorption होता है वो temperature के increase करने से decrease करता है, means at low temperature it is maximum. Now as the temperature gets increased, it starts decreasing. Okay. Now second is the adsorption isobar for, that is chemical adsorption, that is chemical adsorption isobar. Now here again, when a graph is plotted between the amount of gas adsorbed, that is x by m, per gram of the adsorbent versus T at constant pressure P, then this graph you can see it has some sort of different behavior as compared to the previous one. Now here we can see that, and this graph is obvious as we know that जो chemisorption होता है, it firstly in the beginning it increases with increasing temperature, and after some times it starts decreasing with further increase in temperature. And you know the obvious reason for this is that in chemisorption the adsorbate molecules must have some sort of activation energy for the adsorption. Therefore, in the beginning when the temperature is increased, those adsorbate molecules firstly acquire that activation energy and starts adsorbing on the surface of adsorbent. Therefore, we can see in the graph, in the beginning with increase in temperature, the adsorption increases, and then at this point it becomes maximum. Okay, when all the adsorbate molecule have acquired the activation energy and still we are increasing the temperature further, then those adsorbed molecules starts desorbing from the surface, means with further increase in temperature the chemisorption goes on decreasing. So this we have already discussed in the effect of temperature on chemisorption. You know the chemisorption firstly increases with increasing temperature, then after some times it starts decreasing with further increasing temperature. So this is the adsorption isobar for chemical adsorption. So from these two type of curves we can also distinguish between physical adsorption as well as chemical adsorption. Okay, so this is about the adsorption isobars. Now next is applications of adsorption. Now this adsorption is a quite a phenomenon which has a wide application in the industries as well as in the laboratory. So we will discuss a few applications here. The first application is in preserving vacuum, that is you know in दीवार flask, means दीवार फ्लास्क में हम क्या करते हैं, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसको फ्लास्क की जो वॉल्स होती हैं उनके बीच में रख देते हैं, सो दैट कोई भी गैस जो उस फ्लास्क के अंदर अगर एंटर करने की कोशिश करेगी, आइदर ड्यू टू ग्लास इम्परफेक्शन और डिफ्यूजन थ्रू ग्लास, इज गेट्स एब्सॉर्ब्ड. दीवार फ्लास्क क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वैक्यूम बॉटल. इट इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग हॉट एंड कोल्ड सब्सटेंसेस. It consists of two flasks, one placed inside the other with a vacuum in between, and this vacuum prevents the conduction of heat from one flask to other. So this Diwar flask is named after the name of the British chemist and physicist Sir James Diwar.
Okay, so it is the first application in preserving vacuum. Second is in gas masks. गैस मास्क में अगर आप देखो तो जो जो मास्क होते हैं उनके ऊपर एक सूटेबल हमने एड्जॉर्बेंट फिट किया होता है, सो दैट कि जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है वो उस एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है, और जो एयर हम ब्रीथ इन कर रहे हैं इट गेट्स प्यूरिफाइड इजिली. सो इन गैस मास्क ऑल्सो adsorption has a quite wide application. Okay. Third application of adsorption is in clarification of sugar. Means कि जो शुगर होता है आपको पता है वो कलर्ड सब्सटेंस कलर्ड सोल्यूशन होता है, तो शुगर की हम क्या करते हैं डीकलराइजेशन करते हैं बाय एडिंग एक्टिवेटेड चारकोल. मीन्स उसमें चारकोल का पाउडर डालते हैं, सो दैट जो चारकोल का पाउडर होता है वो उस शुगर सोल्यूशन में जो कलर्स प्रेजेंट है उनके अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेता. एज ए रिजल्ट द शुगर गेट्स क्लैरिफाइड, मीन्स इट गेट्स प्यूरिफाइड. और फिर जो फिल्ट्रेट होता है मीन्स कि जो कलरलेस लिक्विड हमें मिलता है उसकी फर्दर हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं जिससे हमें शुगर मिल जाती है. सो मीन्स दिस इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो यूज. नेक्स्ट इज इन क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. Chromatography, you know, it is the most modern and versatile technique or method for the purification, identification, separation and testing the purity of the elements and their compounds. This chromatography technique is also based upon the phenomenon of adsorption. And you know, the principle of chromatography technique or chromatography is that the different components of a mixture gets adsorbed to the different extents on the surface of adsorbents. And there are so many types of chromatography techniques are there, but the most common chromatography technique we know that is the column chromatography. So in column chromatography we have a long wide glass tube in which a particular adsorbent, solid adsorbent is fitted, and the mixture which we have to separate out into its constituent that is introduced from the top, so that the different components of that mixture gets adsorbed on that surface of adsorbent depending upon their polarities, and hence they can be separated out from the bottom of the this column, and hence this technique is known as column chromatography. It is the most common type among these chromatographic techniques. Okay, so in chromatography also the adsorption has an application. Next is in heterogeneous catalysis. Means आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें हम सॉलिड्स को यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट. तो जो सॉलिड्स होते हैं जब उनको एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उनका जो एक्शन होता है एज ए कैटालिटिक एक्शन उसको हम इजिली एक्सप्लेन करते हैं बाय थ्योरी कॉल्ड एज द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. According to this theory, means we will discuss this theory in this unit also. तो in heterogeneous catalysis में क्या होता है कि जो solids catalyst हम यूज करते हैं it can absorb the gaseous reactants on their surfaces. यानी कि जो solid catalyst होता है वो gaseous reactants को अपने surface के ऊपर absorb कर लेता है. As a result जो concentration of reactants molecules होती है वो उस solid catalyst के surface के ऊपर increase हो जाती है, और जितनी वो concentration उसके ऊपर बढ़ जाएगी उतना उसका जो rate of reaction होगा, speed of reaction होगी, मीन्स कि जो एड्जॉर्प्शन होगा या जो रिएक्शन की स्पीड होगी दैट विल आल्सो गेट्स इंक्रीज्ड. फॉर एग्जांपल अगर आप अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैवर्स प्रोसेस, यू नो, और हैवर्स प्रोसेस में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं रिएक्टेंट्स, और उसमें अमोनिया बनता है, और साथ में उस केस में हम सॉलिड कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन. मीन्स कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस होती हैं firstly they gets adsorbed on the surface of iron, and further you know in that case also molybdenum is used as a promoter which increases the efficiency of that iron catalyst. Further in contact process when the sulfuric acid is manufactured, in that case the sulfur dioxide and the oxygen gases gets adsorbed on the surface of vanadium pentoxide V2O5. So these are some sort of examples in which the solids catalyst acts and their catalytic action is due to again adsorption. Next application is in softening of hard water. अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स हम यूज करते हैं फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मीन्स इन ऑर्डर टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, एंड दिस particular process or phenomenon is based upon the
competing adsorption. It is very very important, competing adsorption. So in softening of hard water we can say the process of adsorption is also used. Competing adsorption की अगर मैं थोड़ी सी आपको हिंट दूं तो competing adsorption में क्या होता कि जो different adsorbates हैं they gets adsorbed on the surface of the adsorbent at the same temperature and pressure. Means वो different extents में adsorb होते हैं at the same adsorbent at different at same temperature and pressure. For example, if we have an adsorbent और उस adsorbent के ऊपर अगर हम एक mixture of gases को adsorb करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सी गैस ज़्यादा adsorb होगी, कौन सी गैस कम adsorb होगी, it depends upon the nature. Means कि the more strongly adsorbable gas will adsorb strongly on the surface and a less adsorbable gas will adsorb to a lesser extent. इसको हम नाम देते हैं competing adsorption का. Means the adsorption of a particular gas on that adsorbent it do not depend upon the amount of the gas. Means कि जो most strongly adsorbable gas होगी वो ज़्यादा adsorb हो जाएगी, जो less adsorbable gas होगी वो weakly adsorb होगी. इसको हम नाम देते हैं competing adsorption. Okay. Next application is in removing the moisture from air in the storage of delicate instruments. आपने देखा कि जो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे हम फ्रिज लेते हैं या वाटर कूलर लेते हैं या हम समटाइम गीज़र की बात करते हैं, जो भी मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे से हम पैकेट्स यूज़ करते हैं. मीन्स कि इन केस अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर इन केस वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एज ए रिजल्ट दे गेट्स हार्म्ड. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट some packets of silica gel, means कि सिलिका जेल के हम पैकेट्स उसमें यूज करते हैं. सिलिका जेल एक्ट्स एज ए dehumidizer. Dehumidizer means it removes the moisture from the moist air. Therefore, in that case, the adsorption also has a application. Okay. Next application is in the separation of inert gases. Means जो different inert gases means noble gases, just the elements of group 18. You know, different जो inert gases होती हैं they gets adsorbed to the different extents on different adsorbents. They gets adsorbed to different extents on the coconut charcoal at different temperature and pressure. मीन्स जो coconut charcoal होता है, coconut charcoal से हम different inert gases को separate out कर सकते हैं depending upon their extent of adsorption. कोई inert gas ज़्यादा adsorb होगी और कोई inert gas कम adsorb होगी. So the different inert gases gets adsorbed on the coconut charcoal to the different extents at a different temperature and pressure. So again, the separation of the inert gases is also based upon the phenomenon of adsorption. Next is in the froth flotation process. You know, this froth flotation process is very very important process in the metallurgy and it is used for the concentration of the sulfide ores. सल्फाइड ओर्स की जब हम कंसंट्रेशन करते हैं तो हम प्रोसेस को यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो ओर होता है उसको हम सुटेबल टैंक में डिजोल्व करते हैं, उसमें साथ में पाइन ऑयल डालते हैं, उसमें वाटर डालते हैं. तो जो पाइन ऑयल होता है उसके ऊपर ओर के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं एंड दे गेट्स सेटल्ड डाउन. देयरफॉर जो ओर पार्टिकल्स हैं they form froth and that froth starts floating over it. So in froth flotation process the adsorption also has an application. Next is in paint industry. अगर आप पेंट इंडस्ट्री की बात करो तो जब भी पेंट बनता है तो उसमें डिफरेंट गैसेस डिजॉल्व होती हैं. मीन्स अगर हम उन गैसेस को ऐसे रहने दें तो जैसे हम पेंट अप्लाई करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो उन गैसेस की वजह से वो पेंट जो है वो उस सरफेस के ऊपर इजीली एडहेयर नहीं होता है एंड इट गेट्स रिमूव्ड एज ए लेयर. देयरफॉर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पेंट डिफरेंट एडसॉर्बेंट्स आर यूज्ड which can absorb those gases. And further we can say जब भी हमने किसी सरफेस के ऊपर वो पेंट अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसके ऊपर जो गैसियस लिक्विड है, जो सॉलिड लेयर्स एब्जॉर्ब होती हैं उनको रिमूव करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लिक्विड्स. और उन लिक्विड्स को हम नाम देते हैं वेटिंग लिक्विड्स का बिफोर अप्लाइंग द पेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मोस्ट कॉमनली जब फर्नीचर की पॉलिशिंग करते हैं तो आपने देखा होगा हम उसमें स्पिरिट यूज करते हैं. तो जो जो स्पिरिट होती है इट एक्ट्स एज ए वेटिंग लिक्विड इन दैट ड्यूरिंग
पॉलिशिंग. सो नेक्स्ट इज इन डाइंग. हाँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डाइंग, अगर आप डाइंग की बात करो, जब भी हम किसी क्लोथ को कलर करते हैं तो कलर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डीप करते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्डेंट. दैट इज कॉल्ड मॉर्डेंट. ओके, दैट इज कॉल्ड मॉर्डेंट, MORDANT, मॉर्डेंट. जस्ट एज एन एलम, उसको हम एलम जस्ट फॉर एग्जांपल एलम यूज करते हैं, मॉर्डेंट यूज करते हैं जस्ट लाइक एलम. एलम को हम यूज करते हैं एज ए मॉर्डेंट. मीन्स कि बिफोर कलरिंग द क्लोथ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस क्लोथ को मॉर्डेंट में डिप करते हैं. जो मीन्स कि जो मॉर्डेंट है वो उसके फाइबर्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, और मॉर्डेंट में डिप करने के बाद उसको हम उस डाई के सोल्यूशन में डिप करते हैं. नाउ अब इसका फायदा क्या होगा, अब क्या इससे क्या होगा कि जो मॉर्डेंट है वो क्लोथ का जो फाइबर होगा और जो डाई होगी वो दोनों को एक दूसरे के साथ हेड करके रखेगा. मीन्स कि जो मॉर्डेंट इट एडहेयर्स both to the dye as well as to the fiber. Means, and what is the benefit of it? Means it avoid the uneven dyeing. Uneven dyeing को ये अवॉइड करता है. मीन्स जैसे ऐसा नहीं होगा कि किसी उस क्लोथ में कहीं ज़्यादा कलर का मीन्स डार्क कलर स्पॉट्स बन जाएंगे, कहीं लाइट कलर स्पॉट्स बन जाएंगे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम उसमें मॉर्डेंट यूज़ करते हैं. सो दैट मॉर्डेंट इट अवॉइड्स द uneven dyeing of that cloth. So again it is based upon the phenomenon of adsorption. Next we can say in water conservation. Means there are certain countries in the world there is a huge scarcity of water. Means कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. तो उन कंट्रीज में हम क्या करते हैं कि जो वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं, जो लेक्स होती हैं, उनके ऊपर स्टीरिक एसिड की लेयर स्प्रे कर देते हैं. तो जो स्टीरिक एसिड होता है ये उन वाटर की इवेपोरेशन को रोकता है. मीन्स कि उन वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देता. एंड हेंस इन देयर केस और इन दोज कंट्रीज ये जो लॉस ऑफ वाटर है बाय इवेपोरेशन इट गेट्स अवॉइडेड. So again, in water conservation, the phenomenon of adsorption is helpful. Next is in curing diseases. Means कि अगर आप डिजीज की बात, जैसे कहीं को किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं कि ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं. और जब हम ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं तो जो ऑइंटमेंट होता है वो उन डिजीज़ में जो जर्म्स होते हैं उन जर्म्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेता है, और एब्जॉर्ब करवाने के बाद उनको किल कर देता है. और जैसे वो किल हो जाते हैं तो उस केस में जो इन्फेक्शन है वो क्योर हो जाता है. सो दीज आर सर्टन एप्लीकेशन which are based upon the phenomenon of adsorption. Now at last I want to say you, if you have any doubt regarding the any topic which you have watched in my videos, then you can ask your queries either on me to me on my WhatsApp number, or you can also call me, or you can comment me in my videos. And my number is, my WhatsApp number is 973688962. It is my WhatsApp number. Either you can WhatsApp me, or you can call me, or you can comment me on this number. I will try to clarify your query. Okay, thanks.